बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Overlook and forgive the weaknesses of generous people, because if they fall down, hand of Almighty lifts them. जो वेल मैनर्ड लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो हर एक के साथ मुरव्वत से पेश आते हैं। यहाँ जनरस का मतलब है बामुरव्वत लोग। बामुरव्वत वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं, बड़ों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से, छोटों के साथ प्यार और शफ़क़त से, और एज मेट्स के साथ नरमी और आराम से बात करते हैं। और उनकी बातों में और उनके अंदाज़ में और उनकी डीलिंग में किसी को भी डिस्ट्रेस फ़ील नहीं होती, इंसल्ट फ़ील नहीं होती, डिसग्रेस फ़ील नहीं होती। तो ऐसे लोगों के गलतियों को, उनकी कमज़ोरियों को ओवरलुक करना चाहिए और माफ़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब भी गिरते हैं अल्लाह ऑलमाइटी उनको ख़ुद उठा लेता है, क्योंकि ये लोग बहुत पसंदीदा लोग हैं अल्लाह के। और कोशिश करें कि हम भी इन्हीं में शामिल हो जाएं। ओके, कम टू एक्सरसाइज 5.1. Type C, factorization of the expression of the type a square plus 2ab plus b square, यानी a प्लस माइनस b होल स्क्वायर। इसको ठीक तौर पे समझना है। If we are having two squares like this, square of first, square of second, and twice the first and second, if twice factor is given with plus sign, here we will use plus, and if it is given with minus sign, we will use the negative sign. A plus b whole square. We proceed, and this is not the form of factors, this is form of factors. फैक्टर्स वो होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हुए लिखे जाएं। इसी एक्सरसाइज के 5.1 के पहले जो हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, फैक्टराइजेशन के डेफिनेशन गिवन है, उसमें ये चीज़ है कि फैक्टर्स हमेशा प्राइम फैक्टर्स में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स क्यूब अगर हम लिखते हैं तो वो फैक्टर्स है, नहीं। एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो उसके फैक्टर्स हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो 8 का क्यूब अगर हम लिखते हैं तो ये 8 के फैक्टर्स नहीं है। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फैक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसलिए अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है कि फैक्टराइज करें तो आखिरी स्टेप ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट फॉर्म में हमारी लिखी हुई हो। देन वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट। Now we proceed for question number 3, part number 2, a square by b square minus 2 plus b square by a square. Now we look here, this is a plus b whole square, this is b plus a whole square, there are two squares, so we need to have twice the two factors. इनके दोनों के, ये जो हमारे पास a by b होल स्क्वायर आ रहा है और b by a होल स्क्वायर आ रहा है, इनके दोनों की प्रोडक्ट टर्म होने चाहिए। तो वो प्रोडक्ट टर्म 2 के साथ कैसे डेवलप होती है, हमने उसको डेवलप करना है लाइक दिस। पहले आपने लिखना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, फिर स्क्वायर ऑफ सेकंड, फिर यहाँ से फर्स्ट लिखें, यहाँ से सेकंड लिखें, और इसको कैंसिल नहीं करना, कैंसलेशन शो भी नहीं करनी। ये हमने वो फॉर्म डेवलप की है जो इसकी तरह से है। जब ये हमने फॉर्म डेवलप कर ली तो अब हम इस फॉर्म से जब ये हमने फॉर्म डेवलप कर ली, ये फॉर्म डेवलप हो गई। अब ये फॉर्म जब डेवलप हो गई, इससे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ़ ट्वाइस टर्म इज़ रिटन विद if twice term is written
With plus sign we write here plus, and if it is written with minus sign, so we consider here minus sign. And in our question number 3, part number 2, we are having minus sign with the twice term. So we write it as first minus second whole square. This is first, this is second whole square. This is not the last step. Last step is to write them in the form of product of two quantities. This is a by b minus b by a whole square. We convert this. This is written following this formula. A square minus 2ab plus b square may be written a minus b whole square. Okay, reference is compulsory to write along with the formula. Next step is, as this is square term, squared form, so we write it in product of two similar quantities. Two similar quantities. This is not a square minus b square. This is form of a minus b whole square. So we write it as a minus b into a minus b. I mean first minus second into first minus second. दोनों साइन माइनस के आएंगे. Be careful about it. ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का है, और इसे हमने लिखना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आर a minus b into a minus b. Since any squared quantity is written in the form of two quantities of similar form, इसलिए इन दोनों को सिमिलर रखना है. मिक्स नहीं करना ये फार्मूला किसके साथ, a माइनस बी और a प्लस बी वाले फार्मूला के साथ. वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 3. वी आर गिवन x plus y whole square minus 14z into x plus y plus 49z square. We are to consider that whether there are two squares and the twice term, then we will follow this formula for factorization. Yes, here are, this is square term, this is also square term of 7z whole square. तो हमने इसको पहले इसी फॉर्म में लिखना है जिसमें हमें एक स्क्वायर नज़र आए, दूसरा भी स्क्वायर नज़र आए. हमने दो स्क्वायर्स डेवलप करके लिखने हैं और इनकी ट्वाइस टर्म बना के लिखनी है. तो ये जो हमने ट्वाइस टर्म बनाई है, इसको सिंप्लीफाई करने से वही आता है जो हमारे पास मिडिल टर्म में गिवन है in the given expression in the question. So this may be converted following this formula. This may be converted into first minus second as first minus second whole square. So we follow this and we write x plus y minus, first is x plus y whole square, second is 7z whole square. So we write it first minus second whole square, and then we write first minus second into first minus second. ये साइन सेम रहेगा. बी केयरफुल अबाउट इट. ये साइन सेम रहेगा. एज स्क्वायर्ड क्वांटिटी इज रिटन ट्वाइस इन प्रोडक्ट फॉर्म. साइन में कोई चेंज नहीं करनी. ओके. Be careful about mixing up of this formula with the formula a square minus b square. This is not a square minus b square. This is a minus b whole square. Be careful about it. Thank you very much. Stay blessed.